So, good evening, ladies and gentlemen. Namaste, and a very warm welcome to all of you to the Blub World Web Talks 241st episode. In the last 240 episodes, we have talked to, interacted with more than 4,000 school leaders on this very platform where they've shared their ideas, opinions, innovation, and what all new are they doing in the education space. तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ब्लब वर्ल्ड वेब टॉक्स के 241वें एपिसोड में। पिछले 240 एपिसोड्स में हमने करीबन 4000 से ज्यादा शिक्षाविदों से बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि वो शिक्षा को कैसे बदल रहे हैं और शिक्षा उन्हें कैसे बदल रही है। So thank you so much everyone for joining today as well. In the next 30 to 40 minutes that you are here with us, we'll try to discuss something superbly interesting today as well. If you are tuned into YouTube and if you want to ask any questions, add any topics, send us suggestions, please feel free to DM us. If you're right now on the Zoom call and if you have any questions that you might want to ask, please send those to Blub World in the chat and we'll try to take them during the conversation. So before we start the session, just some ground rules so everyone is comfortable during the whole conversation. First and foremost, the Blub World Web Talks is a timed platform. So once your speaking time is over, you might get muted. If you get muted, please don't get offended. It's just to keep the activity crisp and entertaining for everyone. Secondly, this is a bilingual platform. तो आप अंग्रेजी या हिंदी में से किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें इन्हीं दो में से किसी का करें, कोई तीसरी शायद मैं नहीं समझ पाऊंगा। वंस अगेन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, भाषा कभी भी ज्ञान का पैमाना नहीं होता। लेट इट ओनली बी द मीडियम दैट इट इज। लेट्स नॉट गेट सुपरबली फैसिनेटेड कि हम भाषा के साथ इमेज बनाने लग जाएं, समझ बनाने लग जाएं। सो यूज अ लैंग्वेज दैट यू थिंक योर आइडियाज कैन बी कन्वेड बेस्ट इन। इसलिए भाषा को उसकी स्तर पे, उसकी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। Thank you so much, everyone. Before we start this session, so today's session focuses on something superbly interesting. This talks about redefining discipline, how schools can promote self-regulation and personal growth. ये टॉपिक इतना क्रिटिकल इसलिए है because just some days back अभी बहुत सारी organizations दुनिया भर में जब वर्क फ्रॉम होम से लोगों को पूरी तरह से ऑफिसेज में बुलाना चाहते हैं, हाइब्रिड वर्किंग ऑपरेट करना चाहते हैं, when everyone is struggling between what's better, what's good, दफ्तर बुलाया जाए, घर से काम करने दिया जाए, and ऐसे में when an HR director gives out a statement of a very big corporation कि you cannot hire adults and treat them like children. And when on the contrary we look in schools, हम बच्चों को बड़ों की जैसा ट्रीट करना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें डिसिप्लिन करना चाहते हैं, उन्हें सेल्फ रेगुलेशन नहीं सिखाना चाहते। बहुत सारी सूचना उन तक पहुंचा देते हैं, समझ बनने नहीं देते। The self-regulation that we are talking about today is one of the virtues of wisdom, विवेक। हम क्या बच्चों में किस तरीके का विवेक बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं तो उसके क्या कारण है, और अगर कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या एक्सपेरिमेंटेशन है। We have 3 kinds of people on this call today, जिसमें हम यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स, कुछ HR एक्सपर्ट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्कूल लीडर्स से समझेंगे कि डू दे थिंक डिसिप्लिन really needs a redefinition or it's all good the way it is, और अगर redefinition चाहिए और self regulation सिखाना है तो उसके लिए क्या क्या वो लोग कर रहे हैं और what kind of suggestions do they have for everyone. So teenagers, sit tight. If you have a question, keep it in your mind and put it in the chat so that we can respond to them. A very warm welcome everyone to the 241st episode of the Blub World Web Talks. Let's start this conversation on redefining discipline. Let me invite the first speaker for today. Let's first have the university taste of things. Ki bhai, when universities look at disciplining, they have a very different approach to things. वो उसे कैसे देखते हैं? And how do they really think this treatment changes, alters, improves, deteriorates an individual in the education ecosystem? A very warm welcome to Mrs. Anjali Anand, Seth, the Associate Vice President of Wesleyan College from Macon, Georgia, USA. Anjali ji, over to you for the next 3 minutes. Please unmute yourself and a very warm welcome. Thank you so much for this introduction. I have worked from home for past 13 years of my life. And I think it brings about a different kind of discipline in me. Maybe I can talk a little bit about what as a professional, what really disciplines means to me. So if I were to kind of speak like somebody who's teaching what discipline is all about, and I'm sure my colleagues here from schools would agree,
The word discipline is actually a Latin word which comes from disciplinus, disciplus, sorry, which really means disciple. And disciple means student. So discipline is about a person who wants to study and is a student. Primarily a learned behavior. Discipline is a learned behavior. You can actually teach discipline. And by saying that it is a learned behavior, one important thing that one needs to understand that it cannot be forced obedience just because it is a learned behavior. Uh, Discipline comes about primarily in people who are emotionally and socially mature, you know. And honestly speaking, the way I look at it, since there are HR people also here, it outperforms motivation. So if you're a very disciplined person in your life, your motivation level will always be high. I said 13 years I have worked from home. My discipline had to be very strong for my motivation to be very strong and for me to achieve what I have, in so many years in my profession. But while it is a learned behavior, what I could also say is that the concept of self-discipline, which I observe, is actually a bridge between how I define my goals and how I accomplish them. So it has to be, when I say it is about mature behavior, it has to be very decisive, it has to be focused and oriented towards achieving a certain goal. But how do you achieve this discipline? Self-awareness is something that is very important. I need to know what my strengths are, personal strengths, my weaknesses, my challenges. Only then can I really understand as to how discipline can come in me. And when I say I'm taking myself as an example, I'm taking myself as an example at this stage, not only as a student, but also as an accomplished professional. So you have to set your goals correctly. You have to have an execution plan. You have to prioritize everything. And it's a daily practice. You have to make discipline a habit. Thank you so much, Anjali ma'am. And you're very right. जब आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि आप इतने सालों से you have been on work from home, आप घर से आराम से काम कर रही हैं, and I think that's a skill that you have developed eventually. वो उम्र के साथ भी आई है, experience के साथ भी आई है. And when we look specifically at teenagers, you also mentioned that yes, discipline is a learned skill कि जिसको सीखा जा सकता है और सिखाया भी जा सकता है. Most importantly, एक critical factor that comes into this conversation is कि when we deal with university students या जब आप school students से deal कर रहे होते हैं because they have a transitionary journey to come to the university, do you think there is something missing? Do you think कि self regulation अगर सिखाया जाता तो would it have been better? We'll try to know all of this from you once we go to the open floor. Let's listen to the other speakers. What do they have to say? Let's have a little bit of a insight into what schools really think. कि स्कूल्स को क्या लगता है कि आजकल के बच्चों को क्या सच में डिसिप्लिन किया जा सकता है जब एक बहुत बड़ा क्लासरूम है जिसमें कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं है, जिसके अंदर आपसे डर नहीं है, आपके पास कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप एक बच्चे को या इतने बड़े क्राउड ऑफ टीनेजर्स को किस तरीके से एक सही डायरेक्शन की तरफ ले जाएंगे? सो व्हाट आर द टैक्टिक्स दैट यू यूज एंड डू यू रियली थिंक कि एक स्कूल की जर्नी में एक बच्चे को एक्टिवली डिसिप्लिन करने से वो सेल्फ रेगुलेट हो जाए, ये जर्नी क्या टीनेज के अंदर पूरी की जा सकती है? लेट मी इनवाइट द नेक्स्ट स्पीकर फॉर टुडे फॉर देयर ओपिनियंस ऑन दिस. अ वेरी वार्म वेलकम to Mrs. Amandeep Kaur Thind, the director of Saint Soldier Elite Convent School from Amritsar, Punjab. Ma'am, over to you for the next 3 minutes and a very warm welcome. Thank you. Thank you so much, dear Daksh. It's really nice to be amongst this August people, and it's a great learning platform. So coming to this, that as I have heard Anjali madam, that she's dealing with the elder children, and we as school leaders are dealing with the very tiny tots. And I firmly believe that जैसा बोओगे तैसा पाओगे. तो जो स्कूल्स हैं ये ग्रास रूट लेवल तैयार करते हैं बच्चों का फाउंडेशन. तो जैसा रेगुलेशन अगर हम चाहते हैं कि हमारे बड़े बच्चों में आए, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द प्राइमरी लेवल. ये तो मेरा एक मतलब हम सब कर ही रहे हैं, लेकिन जहां जहां हम चूक रहे हैं वहां वहां हमें ये चीजों को फिक्स करना पड़ेगा. अब पॉइंट ये आता है कि इट्स ऑल अबाउट इमोशन. और आजकल आप देखो, जब मैं बच्चों के अंदर जाती हूँ एंड वी डील विद लॉट ऑफ
पेरेंट्स जो कहते हैं कि मैडम बच्चे मोबाइल देख रहे हैं। अब एक और प्रॉब्लम हो गया शुरू के पहले यूट्यूब था, लॉन्ग वीडियोस थे। नाउ इट्स ऑल अबाउट 30 सेकेंड गेम। सो हमारे न्यूरॉन्स आर वर्किंग सो रैंडमली और इतने जोनर्स में काम कर रहे हैं। कभी कोई हंसी कॉमेडी वाला आ रहा है, कभी कुछ लेसन दे रहा है, कभी आयुर्वेदा आ गया, कभी लाइफस्टाइल आ गया, कभी फैशन आ गया। दैट जंपिंग फ्रॉम वन जोनर टू अनदर, इट्स क्रिएटिंग अनदर प्रॉब्लम इन पेरेंट्स कि बच्चों के अंदर वो जो एक टिकाऊ है, एक रेगुलेटरी सेल्फ रेगुलेशन बिल्कुल खत्म ही हो गया है। Now, when it is with the parents and the society, who is going to deal with? We educators. So, in my school, we have done one activity after the after the lunch break. We have a 10-minute, self-awareness time. We just ask all the students to, relax, lay down their head, and just listen their immediate environment. The fan is working, the birds are chirping, or something is happening in the class. Just listen to it, lay down your head and breathe and think that what they have done in the first 5 periods and what ahead they are planning to do. So the idea behind is to just create that mindfulness. आपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट वी रियली वांटेड टू ब्रिंग फोर्थ कि व्हेन यू लुक एट स्कूल स्टूडेंट्स, हम उनको एकदम उस उम्र से जहां पे दे कैन एक्चुअली चेंज देयर मेंटल मोल्ड, क्या हम सच में सेल्फ रेगुलेशन की बात कर रहे होते हैं? हम उस समय तो उनसे केवल डिसिप्लिन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमने जो कह दिया आप उसको फॉलो कर लें। अंजलि जी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, टिपिकली मींस डिसाइपल्स, वो शब्द लैटिन वर्ड से आ रहा है जिसकी एटिमोलॉजी यही है कि साहब यू आर जस्ट क्रिएटिंग पीपल हु कैन फॉलो यू। व्हेन यू क्रिएटिंग अ क्राउड ऑफ फॉलोअर्स एंड एकदम से आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सेल्फ रेगुलेट कर लें, वो वर्क फ्रॉम होम में भी एफिशिएंट हो जाए, वो काम डिलीवर भी कर दें, तो आई थिंक दिस इज समथिंग जो कि हम वी आर एक्चुअली टॉकिंग पोल्स अपार्ट। हम उन्हें उस तरीके से डेवलप कर ही नहीं रहे। सो लेट्स ट्राई टू नो इट फ्रॉम नाउ अ कॉर्पोरेट लीडर कि उन्हें क्या लगता है कि क्या होता है कि जब अभी, क्योंकि द काइंड ऑफ पीपल दैट यू आर डीलिंग विद राइट नाउ इन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट, जो अभी आपकी संस्थाओं में काम कर रहे हैं, कि कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं जब वर्क फ्रॉम होम दिया जाता है। अगर लिबर्टी है तो उस लिबर्टी को उस हद तक इस्तेमाल किया जाएगा जहां तक कि वो पकड़ी न जाए। तो ऐसा क्यों होना है सेटअप को कि हर आदमी चोर है या हर आदमी ईमानदार है जब तक चोरी पकड़ी न जाए? सो व्हाई डू वी वांट टू कीप द सोसाइटी और द कम्युनिटी अराउंड अस इन सच अ वे कि हम तब तक फायदा उठाएंगे जब तक फायदा उठ सके? So let's try to know from a corporate leader and specifically in consultancies कि जहां केवल लोग ही लोग हैं, विच आर एचआर इंटेंसिव ऑपरेशंस, व्हाट डू दे थिंक कि वहां पर हाउ डू दे एक अंजलि जी ने बहुत अच्छा चीज मेंशन करी थी कि मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन काम करेगा, लेकिन एक एचआर के पास में डिसिप्लिन का ऑप्शन नहीं होता, उसके पास मोटिवेशन और इंसेंटिव्स का ही ऑप्शन होता है। सो व्हाट डू दे थिंक कि सेल्फ रेगुलेशन थोड़ा बहुत है, नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या वो स्कूल लेवल से होना चाहिए, और अगर हो तो किस हद तक होना चाहिए? So let me invite the next speaker for today. A very warm welcome to Ms. Dinky Lakhani, the Associate Director, ex-KPMG India from Mumbai, Maharashtra. Dinky ji, over to you for the next 3 minutes. Please unmute yourself and a very warm welcome. Thank you, Daksh. While I've been listening to all the eminent speakers over here from school and universities. I was just going back to my time when I was in school, and the kids right now. I mean, in this generation, things have changed, right? The ask of the society is also changed. The kind of behaviors that you expect out of people, I think some of them can be or must start from school, right from scratch, right? We build, we learn, we teach them. Discipline comes with that. And as Anjali ma'am said, I think behavioral life skills is something that we need to focus mostly, mental health, resilience, and we talk about IQ all the time, but the most important thing right now is EQ, which is emotional quotient, right? How do you bring maturity as far as emotions is concerned? How do you teach kids to recognize their emotions, which is extremely important? I mean, most of the times we tell kids, why are you angry?
or why are you crying, you're not supposed to cry. That's an emotion that the individual is feeling at that particular point. If you don't let them live the emotions, they will not gain maturity as far as the emotions is concerned. The other point that was picked up was mindfulness. Yes, it is extremely important. The kind of stress that we deal with, when you start working, is completely different from what you read, right? And there are various techniques that one can use to practice mindfulness. I mean, I'll just talk about one particular technique, which is called pause, PAUSE, which means pay attention to your thoughts, your body, and your feelings. Assess what are your activating points, or what's activating me. Understand the root cause of what are you feeling, and then set boundaries. How do you set boundaries for yourself, and empathize and respect everyone around you? I mean, everybody deserves respect. I think these are some of the things that are extremely important that you need to inculcate in students. I think there comes the point of teaching kids that you need to learn to find conflict resolution. It starts from there. We talk about kisne kiya, why did you do it? We start playing the blame game instead of teaching kids that you need to focus on creating that, I mean, resolving that particular issue or the conflict. So I think some of these things which talk about some of the behaviors, some of the qualities that you need as a professional, start from right from your early age, right? And the kind of self discipline that you can teach kids by journaling, by writing down what you're feeling, by inculcating the feeling of gratitude. I don't think there are times when you will have no one to motivate you when you're working, right? The self motivation, the self driver will come from within, and that will come only when you're grateful to whatever you are doing, or to the people around you or situations. And I believe that can come through journaling, which is an important skill which school can teach. I mean, it's for the children to keep and know and not to show, is what I believe. I mean, these are things that should start. थैंक यू सो मच डिंकी जी, एंड आई थिंक यू वेरी राइट कि जब आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कुछ तरीके की वैल्यूज, कुछ सेट ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं इंडिविजुअल से, एंड आप उन्हें वो बिल्कुल नहीं सिखाते, आप उसे पनिश कर करके एक अलग तरीके के मेंटल प्रोसेस में डाल देते हैं। आप उसको प्रोसेस ही ये बना देते हैं कि केवल तब काम कीजिए जब पनिश हो रहे हैं, और अच्छा केवल तब कीजिए जब ब्राइब हो रहे हैं, उसके बिना काम करना छोड़ दीजिए। सो वो इंसेंटिवाइजेशन मॉडल जो है वो ठीक होते होते हमारी प्रोफेशनल लाइफ आ जाती है, एंड उस समय पे हमें वो समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, एंड वी स्टार्ट फीलिंग दैट एवरीवन इज ट्रीटिंग अस अनफेयरली। एंड आई थिंक यहाँ पे जो एचआर डिपार्टमेंट से दे कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड कि आप कितना भी मोटिवेट कर लीजिए, एक्सटर्नल एंटरटेनमेंट्स उनके लिए पैदा कर लीजिए, एंगेजमेंट्स बना लीजिए, लेकिन या तो पैसे का इंसेंटिव काम कर जाएगा। इट्स ऑलवेज द बेट दैट वर्क्स। द प्रॉब्लम विथ इट इज कि कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा कल्चर बहुत समय तक टिक नहीं पाता, क्योंकि अगर कल्चर बहुत अच्छा होता है प्रोडक्टिविटी खराब हो जाती है, और प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है तो कल्चर टॉक्सिक हो जाता है। सो दिस इज समथिंग दैट एचआर पीपल कैन अंडरस्टैंड कि इसके बीच का बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है, एंड बिकम्स अ चैलेंज। अगर ये स्कूल लाइफ से थोड़ा बहुत भी ठीक किया जाए तो शायद द सिनेरियो would change and people might work because they want to do it, not because they have to do it. So let me invite the next speaker for today. Thoda sa let's try again getting a glimpse of what does the school really think. Schools को क्या सच में लगता है कि self regulate हो सकता है कोई teenager? I'll even make the question even more specific. 13 साल से 19 साल का बच्चा क्या सच में self regulate कर सकता है खुद को? Do school principals really feel that? अब देखते हैं कि इसमें से कितना सच बाहर आता है. We'll try to know from them. Because what everyone knows, किसी टीनेजर से रेगुलेशन मानना एक्सपेक्ट करना तो नेक्स्ट लेवल, सेल्फ रेगुलेट तो is something that's just out of the world. So let's see what school leaders have to say. A very warm welcome to Mrs. Taranjot Kaur, the principal of Narayana Techno School from Brew Valley, Amritsar, Punjab. Taranjot ji, over to you for the next 3 minutes. Please unmute yourself, and a very warm welcome. Hi, good evening to one and all present here. So as we are talking about discipline, especially the school part, I think
school lays the foundation for that. We play a very important role, and these days schools are actually increasingly recognizing the need to shift from what was happening before, the externally imposed rules and consequences, to fostering what we call self-regulation and personal growth in students. What we feel these days is, since I've been into the education sector for past more than 15 years, I think there has been a shift, and we have started realizing that the goal regarding discipline is not merely to manage the behavior, but it is more to develop students into a responsible, self-aware individuals who can regulate their own actions, manage their emotions, and contribute positively to their communities. So the traditional discipline models, often they focus on punishment, but that thing I think focuses that solution is very, very temporary. So, we have shifted to restorative practices where the focus is on understanding the underlying reasons for what is causing this misbehavior, encouraging students to take responsibility for their actions. And, this fosters responsibility and helps students develop empathy, which is actually given a special focus on. So, while encouraging self-regulation, it is very, very essential for personal growth, and schools can integrate this by teaching emotional intelligence, stress management, and mindfulness. So these techniques empower students to manage their own emotions and behavior. Though we are asking students too much, but then we need to make efforts so that they realize that this is going to help in the long run. See, we believe that discipline is not limiting one's freedom. It's not about that. It's about channelizing or creating a structure and mindset wherein an individual can unleash their true potential. So schools have started focusing more on personalized behavior approaches, wherein every student we realize is different, and schools we plan to consider each student's social, emotional, and academic background. We are taking that into account, and by personalizing these behavioral strategies, schools we are able to address specific needs and encourage growth through positive reinforcements rather than one size fits all punishments. That is not happening these days. We have also realized that there is an importance of social emotional learning, which is developing skills as self-awareness, emotional regulation, and responsible decision making. Thank you so much, Taranjot ji. And yes, you are right. Schools बहुत सारा effort ले रहे होते हैं कि positive conversation हो, safe spaces हो. And I think जो पहले अमनदीप जी ने भी mention किया, बहुत बार students उस situation को इतना मुश्किल बना देते हैं कि जवाब दे पाना, contain कर पाना बहुत मुश्किल होता है, even for a teacher. Because अब बच्चों पर कोई ऐसा अंकुश नहीं है where you can really set a boundary or set a line. You will always have to. It's so fluid. तो बहुत बार ये दिक्कत हो जाती है कि बच्चे ऐसे ऐसे कॉन्वर्जेशंस कर देते हैं कि उस कॉन्वर्जेशन को वापस नॉर्मल लेवल पे उतार पाना टीचर्स के लिए संभव ही नहीं हो पाता. सो डू यू रियली थिंक कि इसमें कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन होनी चाहिए, और अगर हो तो किस तरीके की होनी चाहिए? दिस इज समथिंग दैट अगेन स्कूल लीडर्स हैव टू थिंक, एक्सपेरिमेंट. क्योंकि हम ये समझते हैं कि आप अपने एंड से टीचर को रेगुलेट करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, बट इवन देन टीनेजर्स को converting them into self-regulated beings is a very big challenge. क्योंकि आप खुद भी देखते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के भी पहले 5-7 साल या 10 साल तक व्यक्ति सेल्फ रेगुलेट होता ही नहीं है. लेट्स ट्राई टू नो फ्रॉम एचआर लीडर्स दैट व्हाट डू दे थिंक कि उन्हें सच में वो परफेक्ट प्रोफेशनल कौन से काम के समय पे मिलता है, कौन से एक्सपीरियंस के समय पे मिलता है, जब वो सेल्फ रेगुलेट हो चुका होता है, जब उसको वर्क फ्रॉम होम देने में कोई दिक्कत नहीं होती, when they can really treat adults like adults. Thank you so much, ma'am. Let me invite the next speaker for today. A very warm welcome to Ms. Gayatri Dixit, the Associate Director, HRBP Delivery Solutions for UPS Company, New Delhi. Gayatri ji, over to you for the next 3 minutes, and a very warm welcome. Thank you so much, Daksh, and thank you, everyone. I have been patiently listening to all the experts' opinions and points. So I would like to pick up from where Daksh has just left us. And I've been thinking the same thing. I would like to start from the place where since March 2020, Delivery Solutions, and I am heading that department, we have been work from home, 100% remote. We are close to 150 people, and most of them
most of them, in the sense, I have done that analysis, around 60% people are Gen Z, and 40% are millennials. These people are awesome. We have got continuously, third year, we have got Great Place to Work certification from international body. And Daksh, you were mentioning that you cannot balance productivity and having a good culture. We definitely can. Why not? With the help of discipline. I'll give you one more example. Till date, we do not have log in, log out. We work from home. We do not have log in, log out. Who is coming, what time? Like, I'm sitting here, people sitting in Bangalore, few people sitting in out of India also. Why? So do you think we do not have discipline? We have scaled from 2020, around having 15 people. Now we are close to 200 people. How we have done that, and that to Great Place to Work certification? It is not because of discipline, it is because of empowering people. So if you say discipline meaning, it should be something which can empower people, which can give accountability. If you give me accountability and give me positive reinforcement, I will be able to do that. For example, we all are sitting here. Why? Because we are passionate about something. We feel some kind of responsibilities, not because of punishment. So discipline, I don't know, like in my school days also, I was also not very okay with having a discipline. See, discipline, I don't know how students and in school environment it is being used. I would suggest, let flourish the student. And in the name of discipline, we should not mold each and every student in given a definition of discipline, because that won't help you much, because they are disciplined in front of you. The moment you are away, they are not. And how can you make them disciplined throughout their journey, from their teenager to their professional life? Give them right reinforcement and accountability. Make them accountable, make them responsible by giving right values when nobody is watching you. I will tell you, there are a few tools available in the market where they come and sell that to HR, say, hello, you can, you can track your employees. I said, no, 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 no. We do not want to track our employee. What they are watching on their system, what are they doing? No, I'm not concerned. I am concerned about their output. I'm concerned about this is your job to be done. This is the timeline. Do it in a 1 hour time, 10 hours time. It's totally up to you. So that's the discipline which come within. Thank you so much, Gayatri जी. And आपने बहुत अच्छा एक ऑब्जर्वेशन दिया कि बहुत आसानी से लोगों को बिना ट्रैक किए हुए जेन जी और मिलेनियल्स में ये मोटिवेशन है कि वो वर्क फ्रॉम होम आराम से कर पाए. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि ये आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल सही है, अच्छा हो भी सकता है. बट द क्वेश्चन वेयर इट एक्चुअली ऑल जर्मिनेटेड फ्रॉम, या जिसका जेनेसिस हमने जहां देखा, मोस्ट ऑफ द लार्ज आईटी कॉर्पोरेट्स, जहां पे उन्हें बहुत सारे लोगों को डील करना पड़ रहा है, जहां पे वो नंबर्स हजारों नहीं लाखों में हैं, वहां पे ये दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वहां पे आप वो छोटे इकोसिस्टम की चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकते. जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे कि प्रोडक्शन के अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, एचआर हैंडलिंग में आई थिंक यू ऑल विल एग्री, वो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाता है. यानी ज्यादा बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में उनको मैनेज कर पाना, कीपिंग देम टुगेदर, कीपिंग देम ऑन ट्रैक becomes a challenge. But I'm not at all discounting what you said. You're very right कि बहुत सारी जगह, and it is amazing कि आप एक ऐसी टीम सच में ऑपरेट कर पा रहे हैं जहां पे आप इतने आराम से you're able to typically rely on their value systems. स्कूल्स के अंदर एक बहुत स्पेसिफिक चैलेंज है जो काफी समय से डिस्कस हो भी रहा है. वैल्यू एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो स्कूल देने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बच्चा उसे वहां से लेता नहीं. फिर स्कूल उस जिम्मेदारी को पेरेंट पर डाल देता है कि वैल्यू एजुकेशन पेरेंट सिखा देगा. पेरेंट के लिए वो कॉन्वर्सेशन ऐसा है कि वो जैसे ही बोलेगा बच्चा उसे सुनना बंद कर देगा. तो वैल्यू एजुकेशन देने वाला आज की तारीख में बच्चे की लाइफ में कोई है ही नहीं. तो उसकी वैल्यू एजुकेशन बेसिकली किसी ना किसी एट रैंडम वीडियो से, किसी रील से, या शायद किसी एट रैंडम कॉन्वर्सेशन से हो जा रही है, बिकॉज उसकी जो मेथडोलॉजीज अभी हैं वो काम नहीं कर रही हैं. And that is why it was also made a important point in the NEP. NEP में भी उस पे विशेष ध्यान दे करके they've made provisions, because that is something that we were not able to solve so easily. So let's try to know from a school leader. अब ऐसे एक स्कूल लीडर से बातचीत करते हैं जो कि टीयर 3 टाउन से आते हैं, कि जब टीयर 3 टाउन में बच्चों को सेल्फ रेगुलेट कराना होता है, जब उन्हें ये कहना होता है कि आपको बिना मारे, बिना डराए, बिना धमकाए हम चाहते हैं कि आप चीजों को समझ जाएं, एकदम ट्रैक पे रहें,
सब schools क्या करते हैं. A very warm welcome to Mr. Kadali Masen Rao, the principal of DGLP World School from Rath, Uttar Pradesh. Kadali ji, over to you for the next 3 minutes. Please unmute yourself and a very warm welcome. Discipline के साथ में आपका क्या experience है? Good evening, actually, good evening to all. So, self-discipline. For that, I want to talk. Actually, I'm implementing the concept in my school where I'm working right now. The all-round development. The concept name is all-round development concept. In that, I'm giving marks to the students for academics, the best qualities which are required to be a good student: academics, punctuality, discipline, spoken English, and the mobile usage restriction. About all these 5 things, I am giving marks every month to the student. By that, month wise, the student is going to develop. That means the class teacher is going to give the marks to every week, actually to say every week, and 4 weeks of a month. In that, who will get the first mark, that student is going to become class monitor. In this way, I am making the students to learn leadership qualities also, training up for leadership qualities also. Thank you so much, Kadali sir. आपने बड़ा अच्छा सा एक छोटा solution बना दिया स्कूल के लिए, and you're implementing also. I think it's interesting कि आप ठीक है एक स्कोर टीचर के हाथ में दे दीजिए कि ऑल राउंड डेवलपमेंट में आप उसे कैसे देखते हैं. एंड ठीक है, दिस इज अ गुड वे ऑफ डूइंग पॉजिटिव बेंचमार्किंग कि थोड़ा सा कंपटीशन शायद आप में थोड़ी सी वैल्यू एजुकेशन खुद ही पैदा कर दे, या उस कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए आप खुद थोड़ा पॉजिटिवली चीजों को देखना शुरू कर दें. तो थैंक यू कदली सर. लेट मी इनवाइट द नेक्स्ट स्पीकर फॉर टुडे. अ वेरी वार्म वेलकम टू मिस शबनम शर्मा, द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन डिसाइपल्स इंटरनेशनल स्कूल फ्रॉम अमृतसर, पंजाब. मैम, आपके स्कूल के नाम में डिसिप्लिन शब्द है. आपको क्या लगता है दैट हाउ आर यू रीडिफाइनिंग डिसिप्लिन? डज इट रियली नीड रीडिफाइनिंग, या बच्चों के साथ में अब क्या टैक्टिक्स हैं जिससे कि क्लासरूम को कंट्रोल, कंटेन और चलाया जाता है? Over to you. You know, this discipline disciple, as you said, my school name is very, thematic. Discipline Disciples International School. So discipline, when the disciples are there disciplined, both the words, we can go back and forth to dismantle these, terms and disseminate the meaning out of it. I won't go there, but I would, emphasize on this thing that, it's very rightly said, it takes a village to raise the child. You can't blame anybody for that. There are, so many stakeholders. There is genetics, there is environment. We can't challenge genetics, but we can provide them the environment which regulates their behavior, which groom their personality from the foundational stage. And pretty long span of the time of a student's life is spent in the school. So schools are the second home. The moment the child enters the school, he should tune himself or herself to the environment of the school. एक CBSE ने बहुत अच्छा निकाला था, happy school, right? What was the concept behind? Now this, Bal Vatika, what is the concept behind? This holistic progress card, what is the concept behind? We call about the Panch Kosh, what is the concept behind? All these concepts are to, provide the best of the services to the child, in not in the form of, you can say the sports or rest of the things, the fancy things, but a very good environment where everybody is a role model. If there is a shortcoming in the family setup, of course, we have limitations. We can't barge into the personal space of the children and family. We can counsel them at times. We can hire the counselor. There can be so many things but done. But, I don't say spare the rod and spoil the child, not at all. It has severe repercussions on the mindset and psychology. Very sometimes I tell everybody that these children are small cameras moving here and there. They're watching, and their watching is their learning. Whatever they are watching, experiencing from their parents, society, if they happen to go somewhere, they are unintentionally they are picking up good or bad. Now, to apply the filter to take the good and repel the bad is fundamentally the duty of the adult around. Right, when you say it takes a village to raise a child, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे लोगों का बहुत छोटा छोटा एफर्ट होता है जो फाइनली जुड़ करके किसी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है. एंड आई थिंक आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जो कि सारे पेरेंट्स को टिपिकली समझना चाहिए कि जैसे ही आपके घर में कोई बच्चा है, आपने अपने ऊपर एक सीसीटीवी लगा लिया है.
बिकॉज आप कुछ भी कह लें, आप कैसा भी बता लें, आप कुछ भी उसे पढ़वा लें, वो एम्यूलेट केवल आपकी हरकतों को करेगा। जो वो देखेगा वो वही सीखने वाला है, आपके ज्ञान को जज्ब नहीं करेगा। देखिए वो ही और शी वोंट एब्सॉर्ब व्हाट यू आर सेइंग बट विल इंस्टेंटली एम्यूलेट व्हाट यू आर डूइंग। तो सबसे पहला एग्जाम आपको समझना होगा कि इंसान एप से बना है, उसे सबसे अच्छा एम्यूलेट करना ही आता है। तो उसे ऐसा सिनेरियो देना होगा कि वो अच्छी चीजें एम्यूलेट कर सके। आई लाइक टू शेयर अ वेरी स्मॉल लिटिल एक्सपीरियंस। जस्ट सम डेज बैक मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार आई एक्चुअली सॉ अ गोरिल्ला इन फ्रंट ऑफ मी, जो मैंने कभी एक्चुअल लाइफ में नहीं देखा था। बट व्हेन आई सॉ दैट गोरिल्ला, तो मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि यार इस जानवर का एक्सप्रेशन इतना ह्यूमन लाइक है कि इसे ये समझ में आ रहा है और ये मुझसे सच में यही पूछ रहा है कि आप यहाँ क्यों खड़े हो और मुझे क्यों देख रहे हो। एंड व्हेन यू कैन सेंस दैट ऑन अ गोरिल्ला, इट्स सुपरबली इजी टू सेंस इट ऑन योर चाइल्ड। तो हमें शायद ज्यादा सेंसिटिव लोग, ज्यादा समझदार लोग बच्चों के आसपास चाहिए। और अगर वो सेंसिटिविटी नहीं है तो उसे बनाना कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन वर्किंग अ लॉट ऑन द कंटेंट। सूचना बहुत सारी दे चुके, बहुत सारी पढ़ा चुके, समझ नहीं बन पा रही सूचना से, विल हैव टू फिगर आउट मोर वेज ऑफ इट। इस पूरे कॉन्वर्जेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम करना चाह रहे थे, जिस बात को वी टिपिकली वांटेड टू ब्रिंग टू द फोरफ्रंट, कि हम जब स्कूल्स के अंदर एज प्रिंसिपल्स हैं, जब ऑर्गेनाइजेशंस में एचआर डायरेक्टर्स हैं, जब यूनिवर्सिटीज के अंदर हम हाई एंड प्रोफेशनल्स हैं, जब हमें सबको लोगों को डील करने में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि ये व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, या ये हम जज ही उसी बेसिस पे कर रहे होते हैं कि हमें संस्था में चाहिए या नहीं चाहिए। डू वी रियली हैव अ मेथोडोलॉजी टू ट्रेन देम फॉर दिस? व्हाट वी थिंक वी सीरियसली मिस दिस। हम उसे सेल्फ रेगुलेशन नहीं सिखा पाते। स्कूल कभी कभी पेरेंट के ऊपर छोड़ देता है, पेरेंट स्पिरिचुअलिटी के ऊपर छोड़ देता है, स्पिरिचुअलिटी धर्म पे छोड़ देती है। लेकिन सबके छोड़ने के चक्कर में कोई मेथोडोलॉजी फॉर सेल्फ रेगुलेशन पैदा ही नहीं हो पाती जो एम्पेरिकली प्रूव की जा सके। हम कृष्णमूर्ति को सुन लेंगे सेल्फ अवेयरनेस के लिए, हम कबीर को सुन लेंगे अपने आप को एक ऑरा या एक जोन में रखने के लिए, लेकिन हम ये कभी नहीं समझ पाएंगे, या शायद अगर इसके ऊपर कोई फोकस एफर्ट नहीं हुआ, दैट वी नीड अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉर ह्यूमंस टू लर्न सेल्फ रेगुलेशन। Thank you so much, everyone. This was the Blub World Web Talks 241st episode. I hope you enjoyed. If you did, and if you want to attend the future sessions, open your audio, say a big yes, and have an amazing evening ahead. Thank you so much, everyone, for being a part of this session. Namaste.